Good morning and a very warm welcome to all the viewers on Doordarshan Sports as we bring you this morning live show, Sports Cafe. I'm Arjun and joining me in the studio is our eminent sports expert and senior sports journalist, Shri Rupinder Singh. Rupinder, a very warm welcome to you on the program. Thank you. And it's nice to see that it's getting warmed up also, and we're losing the bite of winter. Well, I'm sure not everyone will agree with you, but it is rather chilly in the morning and it does become warm as the day progresses. So let's now begin the program with the top headlines. Yuki Bhamri, Ramkumar hand India 2-0 lead over New Zealand in the Davis Cup tie. India registers its fourth win, beats South Africa by 9 wickets in T20 World Cup. Aditya Ashok stays in the hunt at tied third place in the Gold Coast Challenge. And Kalinga Lancers scored narrow 6-5 win over Punjab Warriors in the Hockey India League. Well, speaking about the latest action from Davis Cup, and the question is, who will Leander Paes play in the doubles? Before that, India's taken a 2-0 lead with Yuki Bhamri and Ramkumar Ramanathan winning the singles tie. Mail today. Advantage India. Yuki and Ramkumar score fluent wins to put host 2-0 up in the Davis Cup tie against New Zealand. Times of India once again, India off to a flyer. Cruise to a 2-0 lead over New Zealand in the Davis tie. Yuki and Ramkumar give India 2-0 lead in the Sun Times. Dainik Jagran, Ramanathan एवं भामरी ने जीते मुकाबले. Both winning in straight sets. Hindustan, Yuki और Ramkumar ने बढ़त दिलाई. What's left is now the doubles. Leander Paes partnering and unknown partners yet. Amar Ujala, Davis Cup में जोरदार आगाज. दैनिक भास्कर, बामरी राम ने दिलाई 2-0 की बढ़त. Well, Rupinder, the big question is, who will Leander partner in the doubles tie? Well, I think the bigger question in Indian is the singles performances, and it was a wonderful start, although on anticipated lines, because India had already beaten New Zealand in the previous years in New Zealand. So winning in India was a formality. The chasm and the difference of standards was huge. But the interesting thing was the way to watch Yuki Bhamri recovering from his injury, serving well, putting out an all-court game, and Ramkumar Ramanathan, the young boy, serving above 200 kilometers per hour consistently and getting it right and following it up with a game. It augurs well for India in the singles. I feel they should do a little bit more in singles rather than getting carried away by Leander Paes' record. When it comes, we'll talk about Leander Paes. But right now, the stars of the show on the first day were the young Yuki Bhamri and Ramkumar Ramanathan. Put up a solid display of tennis. Ramkumar Ramanathan seems an exciting talent because of his serve. You know, in the world, unless you're 6 feet 8, 10, you can't put on their serves. But there are the exceptions like Nadal who can come and fight you. But even he is 6 foot. So Ramkumar has that advantage. And Yuki also is nice and tall. So these are two good prospects for India for the future. Along with the serve, जो court coverage है, that's equally important. Absolutely. तो अगर singles tie देखें, straight set victory रहा है अभी. आपको कहाँ लगता है कि अगर ये if they play against top ranked players, do you think perhaps they can perform better? क्योंकि जो हम performance देख रहे हैं, it is primarily in the Challenger and the ITF events. Yes, no, but Yuki went to the Australian Open Challengers, won 2 and rounds in the qualifying and lost only in the third, which is the final. Earlier he had won and played Andy Murray, if I remember right, in the US Open, and he had played creditably. Yes, in tennis you have to knock yourself around and be very hard-nosed. Even a talented boy like Nick Kyrgios, who has everything going for him except his discipline, is stumbling. Whereas a younger German disciplined boys like Alexander Zverev and Misha Zverev are coming up. So the basic core is the discipline towards your physical fitness, and that develops the all-round game. Look at Nadal. He's a perfect example that these boys can learn from. It's hard work.
See, you have to be an athlete before you become a tennis player or a basketball player or a footballer or a hockey player or actually even a cricketer. To maintain your form, Absolutely. अगर हम यूकी भामरी की बात करें, वो अभी इंजरी से रिकवर करके आए हैं, आपको लगता है कि शायद वो पार्टनर करेंगे लिएंडर पेस को इन द डबल्स? It's a surprising thing, the way the thing has evolved. I think the essence is they know India is going to beat New Zealand. Now, there is an opportunity for this record, and the All India Tennis Association, pushed by Leander Pace, are desperate to get that record, and it is now very close to achieving it. Remember yesterday when Saket Mainini, who was the good partner, and they played well against Nadal in the doubles in Delhi in that Davis Cup tie. So that would have been the obvious choice. Saket got injured. They had a substitute to take that chance if someone gets injured, Prajnesh, but they did not play him. Leander forced them to call Vishnu because he probably thinks with Vishnu he has a better chance to win the doubles. And after the results yesterday, my mind is working overtime and telling me that he might discuss with Anand Amritraj, this tie is done and dusted, why don't you give me Yuki Bhamri to play with? So I don't know what's going to happen because they have not been transparent in their selections. They've just gone haphazardly. I don't know if they make any other move. So if India wins this New Zealand tie, and they have already, what is the next step in this Asia-Oceania Davis Cup tie? Then the toughness becomes. The next tie is the opponents are going to be Uzbekistan or Korea. And Uzbekistan, remember Denis Istomin, the man who won an Asian Games gold, surprised Djokovic currently in the Australian Open, and a couple of other good players. And Korea has one outstanding player who played up to the second or third round in Australian Open and played very tough tennis. So both those teams at their top, and especially if we travel to their countries, that's going to be the challenge beginning for India. This one is an easy one. Well, next up is the disabled players taking part in the T20 blind for Players World Cup, where India has won against South Africa, the fourth straight win. Let's look at the coverage in the newspapers. Times of India. India hammers Proteas. 157 was the score put up by South Africa. India scored 158 for 1 in 13.5 overs. Hindustan Times. Indian blind team beat South Africa by 9 wickets. Indian Express, you can see the pictorial there, all rejoicing after India's fourth victory, this time against South Africa. Farhan and Iqbal coming up with useful half centuries, both remaining not out. Dainik Bhaskar, Bharatiya blind cricket team jeeti. Hindustan Bharat ki Dakshin Africa par jeet. अमर उजाला, दृष्टिबाधित क्रिकेट ने भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेटों से हराया। दैनिक भास्कर, ब्लाइंड वर्ल्ड कप भारत 9 विकेट से जीता। Fourth successive victory, and India coming up with triumphs, just 158 for 1, losing just the 1 wicket with the partnership more than 100 runs. Yesterday also they beat England 158 for no loss. If I remember right, in reply to the 158, they got 159 for no loss with the two partners getting all the runs. In under 11, 13 overs. Yes. So look at that performance. For me, the victory is the boys coming to play itself. These are now add-ons, and it is very satisfying when the Indian cricket team comes, plays. Just imagine for yourself, you can't visually see the ball. You have to hear the voice, adjust yourself, get into position. How difficult it is when the ball swings even for Virat Kohli to get into position. And here, without their sight, they are doing that and hammering runs. So full marks to them. So when the ball comes to you, is it because it rattles? Is that how you're able to hear? Yes, it is basically because it rattles, and that is the sense which develops. This is God's creation. He takes something, but he gives something. So the way the bowler bowls is underhand and along the ground, so that one can hear the ball before they strike it. Absolutely, absolutely. And then they more or less sweep shots are the ones. Maybe a cover drive, maybe a sweep, maybe anything. But yes, all along the ground. So you see that India and Pakistan are the dominant teams in this blind T20 World Cup? Judging from the past and now judging from results, England, India, South Africa. Now we are left with one more, Australia. After that, Pakistan has also been winning all their matches. So it looks like
We are heading for a super Sunday final, maybe whenever it is due, and these young boys deserve all the credit for it. Well, kudos to the blind T20 team from India and, of course, Pakistan, the other contender. Moving on to other news in golf now with Aditi Ashok in tight third place. And let's see what the coverage is in the press. Aditi stays in the hunt. That's the mail today with two Indonesians up front, also tied. India, Aditi stays in title hunt at 2017 Gold Coast Challenge. Indian Express, Aditi slips a third spot in the Gold Coast Challenge. Amar Ujala, तीसरे स्थान पर Aditi Ashok. Well, women's golf now certainly picking up with these results. We'll have to see how far she can go. The first two positions are tied by the Thai opponents. Do you see Aditi overcoming that? Because you have a good day in golf and then you have a bad day in golf. Absolutely, she's capable. She's shown her form last year, considering she's a very young girl who was just out of school, Frank Anthony Public School in Bangalore. She has made remarkable strides in the last season. Her performance at the Olympics were outstanding, at other majors, qualifying for PGA events in the women's section. Wonderful performance by Aditi Ashok, considering unlike the men golfers who had forerunners like Jeev Milkha Singh and Arjun Atwal and other people to look upon before they embarked on their journey, this lady is the first. She is legendary in the sense that second year in professional golf, yes, 18 years old. Absolutely. We were earlier discussing about the importance of professionalism in sport. Someone this young, how do they enter into the money-making side of sport itself? It's fortunate for them because some of them have very good parents. If you look at India's history in Olympics, only one man has won a gold medal individual, that's Abhinav Bindra. It was not mainly his talent, it was the fact that his father could pump money and take him to the best coaches all over the world. Support is very important. Yes, and he had the vision for himself. So that is the most important thing, and Aditi has grateful parents who are happy to support her. We must have parents who will invest in their child's dreams. Why force this class 12 on everyone, BA on everyone? Allow children to dream and follow their dreams. The moment India starts doing it, we won't need money from the Sports Authority of India. Well, that's pretty well said. But the men's side, they had teed off together, including Anirban, Lahiri and Chaurasia. What has been their position so far? I think there was a storm in Dubai yesterday and most of it got postponed. So no real progress made there. But it seems Tiger Woods did get a chance and his back is again injured and he's dropped out. Well, you have an Indian sponsor backing Tiger Woods. Yes. Certainly Indian golf looking at greener pastures now. Well, moving on to other sport now, this time hockey, with Kalinga Lancers defeating the very talented Punjab Warriors in a closely fought game, 6-5. Mail today, Lancers overcome Warriors with 3 goals by Glenn Turner, with Fierst and SK Uthappa, the scorers for Kalinga Lancers. Times of India, narrow win for Lancers. The field goals bringing you 2 points in this new format of the Hockey India League. Hindustan Times, Kalinga Lancers beat Punjab Warriors 6-5. That is a coverage from Bhubaneswar. Indian Express, Lancers scoring narrow win over Warriors, just the 1 point separating the two sides. दैनिक जागरण, कलिंगा की पंजाब पर रोमांचक जीत. हिंदुस्तान कलिंगा की पंजाब पर 6-5 से जीत. अमर उजाला, कलिंगा लैंसर्स की पंजाब वॉरियर्स पर रोमांचक जीत, 6-5 से हराया. दैनिक भास्कर, कलिंगा की चौथी जीत, पंजाब वॉरियर्स को 6-5 से दी मात. Well, Kalinga Warriors with their 4th successive win against Punjab Warriors, which I felt were the strongest side. But this narrow victory, what is it telling you about what is to come up ahead? Well, it's very tough. And right now, after this win, Kalinga Lancers on top of the table. Punjab has been struggling. They lost to Dabang Mumbai
10-4. They came back with a win over Ranchi Rays and today again beaten. But these are all away matches. So let them come back to Chandigarh and in their home den, perhaps they will play well. If you remember, last year the final of the Hockey India League was played between Punjab Warriors and Kalinga Lancers, and Punjab Warriors whipped Kalinga Lancers. So it was a wonderful revenge match, so to say, for the Kalinga Lancers, and they came very well planned with the two absolutely outstanding foreign individuals, Christopher Moritz Furtse and Glenn Turner. And they inspired the Indian boys also to score. And before we could blink our eyes, they were up 6-0. And from them, as you said, Punjab responded and fought valiantly till the end, and the score was 6-5. So this is the kind of competition which really brings out the best in a sport. Not the kind of competition we saw in the tennis yesterday. It didn't interest us, but this was wonderful. Perhaps in the tennis, taking on Korea or Uzbekistan will be interesting. Well, there's plenty of talent in Jharkhand. We're seeing that in the hockey teams that are being created as well. I want to bring attention to one player, Mink van Verden, who is a defender and he's been scoring goals for Punjab Warriors. Now, tell us something about him. Yes, he didn't really come off. There were very good saves by the goalkeeper, and that's one of the causes why they couldn't get the goals delivered. He is the world's best drag flicker right now, plays for Netherlands, and is definitely an asset to Punjab Warriors. Over the long run, you will see them coming into form, and there will be many more ripples before we see the final. Well, let's now look at what's the latest action on cycling, with Deborah Herald leading the Indian challenge at the Asian Track Cycling. Let's look at the press coverage for cycling. Mail today, Deborah eyes a better ranking in the Asian meet, 35-member team, and she will be taking part in at least 3 events. Times of India, Deborah to lead Indian challenge, 200 meter sprint, 500 meters time trial, and the Kirin individual events. Indian Express, Deborah leads Indian challenge at the Asian meet, which will be held in the Indira Gandhi Indoor Stadium Velodrome in New Delhi. दैनिक जागरण, दोबारा करेंगी भारतीय चुनौती की अगुवाई. अमर उजाला, एशिया ट्रैक साइकिलिंग 6 से भाग लेंगे 18 देश. So cycling making the news now with a 35-member team. Deborah Herald, how do you see her leading this challenge? She's also taking part in at least 3 events. Yes, she's been very successful in a Track Asia Cup previously held at the Indira Gandhi Velodrome. And I remember she beat very tough competitors from China, Korea, in order to win her events in the sprints. And she's a very capable competitor. And the best thing is the story of the rise of Deborah. She was one of the tsunami survivors from Andaman and Nicobar. She was hung on a tree and stayed there for 2-3 days to survive. And these kind of trying circumstances then give, you remember the story of Milkha Singh, how he lost his parents in the review. So those kind of circumstances are destroying in certain ways, but they give the person concerned an opportunity to come back and with the vengeance do well. Well, that's our main story segment. Let's now move on to our other segment. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा शो जो है वो आपको जरूर इंस्पायर कर रहा होगा और आपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी होगी, और अगर नहीं की है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप जल्द से जल्द एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए. आज हम बात करेंगे आर्म्स के बारे में, क्योंकि आर्म्स एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो हमेशा नजरअंदाज होता है. और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है संदीप जी. संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. थैंक यू पूनम जी. संदीप जी, आज हम आर्म्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आर्म्स ऐसा पार्ट है, स्पेशली अगर लड़कियों की हम बात करते हैं तो वो आर्म्स को हमेशा नेग्लेक्ट कर देती है. बिल्कुल बिल्कुल. उन्हें लगता है कि जो आर्म्स है या बाइसेप्स है वो सिर्फ लड़कों की बनाने वाली चीज है, या लड़के ही उससे ज्यादा इंस्पायर होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप हमें कुछ बताइए जिससे लड़कियां भी इस बॉडी पार्ट को जो है इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें. जी बिल्कुल पूनम जी, इसमें मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि इसमें एक्सरसाइज को लेकर के लड़का या लड़की लेना है तो बिल्कुल ही बेकार है. जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है. और मसल ग्रो का हाँ एक ये मान सकते हैं कि हाँ भाई मसल ग्रो फीमेल के नहीं होते, वो मेल के ही होते हैं. मगर हाँ, जिन लड़कियों का या जो लेडीज जिनका देखा होगा अपने काफी लूज हो जाता है, आने वाले टाइम पे फिर वो अपने लूज कपड़े पहनती हैं, वो अपने छुपाती हैं, दिखाती नहीं है. वो दिखाती मीन्स कहीं फंक्शन में जाना हो या जैसे भी है,
तो उन लोगों को फिर शर्म आने लगती है, तो फिर क्या करें, उसके लिए फिर जिम करना चाहिए। अब वो जिम उन्हें पता भी तो हो कि क्या करना है क्या नहीं, तो हम आज आपको बताते हैं कि किससे ये सही हो सकता है, किससे नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज है अगर जिसे हम करेंगे तो मुश्किल से 6 हफ्तों में बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा। जो लेडीज़ों को शिकायत है कि हाँ भाई मेरे आर्म जो है लूज है या कोई भी बॉडी पार्ट लूज है, तो वो एक्सरसाइज से एकदम सही हो जाता है, बस करने वाला होना चाहिए। अच्छा, तो आर्म्स में हमारे कितने पोर्शंस आते हैं, लाइक जैसे ये अगर बाइसेप्स बोलते हैं या फोर आर्म्स बोलते हैं, तो क्या क्या पोर्शन अलग अलग मसल्स को अगर डिस्क्राइब करें तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जो हमारा जो फ्रंट मसल होता है इसे हमें बोला जाता है बाइसेप्स, और जो इसका जो बैक मसल होता है इसे बोला जाता है ट्राइसेप्स, और यहाँ से लेके ये हमारा जो होता है इसे बोला जाता है फोर आर्म। तो हमें इन तीनों की एक्सरसाइज करनी होगी और डिवाइड करके, ऐसा नहीं कि भाई सारा एक ही सारा कचरा कर दिया एक ही बारी में, एक ही दिन नहीं करना है। नहीं, डिवाइड करके, जैसे बाइसेप ट्राइसेप को आप साथ ले सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, फोर आर्म को अलग रखना पड़ेगा जी, इस तरीके से जी। और बाकी फिर आज मैं करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए संदीप जी, आप हमें करके दिखाएं और बताएं कि कैसे हम वो आकर्षक आर्म्स हम पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो होगी ट्राइसेप पुश डाउन, जो कि हमारे ट्राइसेप मसल्स के लिए आता है जी। वो अब करके दिखाएंगे, आज करके दिखाइए। गुड, इसका सही तरीका यही है, इसको इसी तरीके से करना होगा, एकदम धीरे धीरे लाना है और धीरे धीरे नीचे पुश करना है। गुड, आप जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि आपका ट्राइसेप मसल ही इसमें वर्क कर रहा है। बढ़िया। संदीप जी, ट्राइसेप मसल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कि हम अगर बोला जाए तो क्या फायदे क्या हैं इसके, अगर हम इस पे ज्यादा जोर दें या इसको अगर हम एक्सरसाइज करें तो फायदे क्या हैं इसके? पूनम जी, इसमें फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहले अगर आपके आर्म्स स्ट्रांग होंगे तो आप बहुत से काम जो है इजी कर सकते हैं। सारी ताकत तो इसी से लगनी है ना। अगर सपोज अगर आपको चेस्ट बिल्ड करनी है तो उसमें भी आपको हाथों से ही प्रेस करना होगा। बहुत सी एक्सरसाइज है जो कि अगर आर्म्स स्ट्रांग नहीं है आपके तो आप फिर समझ जाइए बेकार है फिर तो। जो लेडीज जैसे होती हैं जिनके लूज होता है मसल, तो उन लेडीज़ों को इस एक्सरसाइज को कम से कम 4 सेट करने होंगे और 15 से 25 रेपिटेशन रखने होंगे। अगर वो इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो अपना बहुत जल्दी अपना उनका शेप में आ जाएगा। तो संदीप जी ये बताना चाहते हैं कि जो एक एज के बाद एक फ्लैप आ जाता है आर्म्स के अंदर, जो कि बहुत अगली दिखता है और वो फिट भी बिल्कुल नहीं कहा जाएगा उसको, तो उसको आप कैसे कम करें, उसके लिए ही हमें एक्सरसाइज ये वाली जो है ये हमें करनी चाहिए। और पूनम जी, मैं तो यही कहूँगा कि आज के जनरेशन में तो जितने भी हमारे यूथ हैं, चाहे कोई भी हो, उसे जिम तो जाना चाहिए। जिम ना जाए तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो जरूर करें। नहीं तो आप देखा होगा आजकल की जनरेशन, बच्चा जो है 15 से 16 साल का होता है मगर उसका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पूछो मत। जी राइट। हमारा सब ये खान पान पे है, सब डिस्टर्ब हो चुका है, तो इसीलिए जो है जो हमारे बच्चे भी हैं वो भी इसी तरीके से होते जा रहे हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बच्चे आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, तो आज से ही ये ठान ले कि हम एक्सरसाइज जरूर करेंगे। धीरे धीरे। गुड। संदीप जी, ये एक्सरसाइज तो बहुत ही एक्साइटिंग दिख रही है, इस एक्सरसाइज के बारे में हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल पूनम जी, इस एक्सरसाइज को बोला जाता है डंबल ओवरहेड प्रेस जी। और ये एक्सरसाइज जो है ट्राइसेप मसल्स के लिए होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर इसको आप करते हैं तो बहुत अच्छी शेप पा सकते हैं। अच्छा। और यही एक्सरसाइज आपको लड़का और लड़की कोई भी हो, किसी भी एज का हो, कर सकता है आराम से। मगर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, स्टार्टिंग जो है लाइट वेट से ही करनी है जी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी अपने एपिसोड में कहा था कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा लाइट वेट से वार्म अप करें, वार्म अप करने के बाद फिर वेट पे आए, फिर एक्सरसाइज। जी हाँ बिल्कुल, लापरवाही ना करें, लापरवाही ना करें बिल्कुल। तो इसके कितने रेपिटेशन करने चाहिए हमें? इसके रेपिटेशन अगर हमें ग्रोथ करना है मसल तो हम 6 to 8 ले सकते हैं, और अगर जैसे फीमेल हैं जिनके टोनिंग के लिए ले सकते हैं 12 से 15 रेपिटेशन। अच्छा। जी बिल्कुल। और अगर बॉडी यूज टू हो जाती है तो 15 से 25 भी जा सकते हैं। 25 भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या डेली बेसिस पे हम इसे कर सकते हैं या कुछ एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट हम इसको करें? कम से कम एक मसल को अगर आप ट्रेन करते हैं तो कम से कम उसके लिए 48 घंटों का रेस्ट चाहिए होता है। अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप 48 घंटे के बाद जब मर्जी कर सकते हैं उसको, यानी वीक में आप 2 या 3 बार तक कर सकते हैं आराम से। चलिए हमें करके दिखाएं संदीप जी कि क्या इसका बॉडी पोस्चर है और कितने रेप हमें करने हैं, तो एक बार आप हमें डेमो करके दिखाएं। बिल्कुल पूनम जी, बिल्कुल। स्टार्ट करो इस तो चलो। गुड। अब जैसे पूनम जी आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं आप कौन सा मसल इसमें वर्क कर रहा है, दिख रहा है ना आपको? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसको इसी तरीके से करना है, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। गुड।
तो ये पहले ऊपर ले जाना है और वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना है, फिर उसको नीचे जी लेके आना हाँ, है। दोनों तरीके से चलना होगा, यानी ऊपर भी आपको रेस्ट करना है और और नीचे नीचे लाने के लिए भी रेस्ट करना है। जी, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। जी। नहीं तो फिर करते रहो, कोई फायदा होना नहीं है उससे। कुछ लोग होते हैं जो करते रहते हैं कंटिन्यू, उसका जब तक फील नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? तब तक सही तरीके से की गई एक्सरसाइज ही फायदा पहुंचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, तो बिल्कुल। जैसे हम अगर बॉयज की बात कर रहे हैं और बॉयज को जो मसल है वो ग्रो करनी है, जी, जी। तो क्या ज्यादा वेट उन्होंने लिया हुआ है? जी हाँ, अगर मसल ग्रो करना है तो आपको वेट भी वही करना होगा, जैसे मैंने बताया था 6 to 8 रैप। तो 6 to 8 अगर आपके 5 किलो से या 10 किलो से इजी निकल जाते हैं तो आपको वेट इंक्रीज करना होगा। राइट। और अगर नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है। तो वेट हमेशा इंक्रीज करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि मुश्किल से आपके 6 to 8 निकले। राइट। तो प्रेशर आएगा ना मसल पे, प्रेशर आएगा तो आपका ग्रोथ होगा। जी। इस तरीके से। तो संदीप, ये तो आपने बताया हमें कि बॉयज को कितना वेट और कितनी रेपिटेशन करनी चाहिए। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो क्या फीमेल को वेट थोड़ा कम की लाइक जैसे ये डंबल हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा लाइट डंबल है, तो लाइट डंबल से अगर वो करें तो उनकी टोनिंग जल्दी हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, लाइट वेट से करें और जितना ताकत हो उसका 75% वेट उठाएं। एकदम से लापरवाही ना करें कि एकदम से हैवी उठा लिया, या कई बार क्या होता है हम टीवी में या पोस्टरों में देखते हैं और बस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो नहीं, अपने ट्रेनर से पूछें कि भाई मेरे लिए वेट क्या रहेगा, एक्चुअल वेट क्या है, मैं किस वेट से करूं। आपको पता होना चाहिए आपका वेट, नहीं तो फिर लापरवाही तो फिर आप इंजर्ड हो जाएंगे, कुछ ना कुछ मसल आपका इंजर्ड हो जाएगा, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे फिर। ये एक्सरसाइज जो आज आपने हमें बताई ये काफी इंटरेस्टिंग थी और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को इनसे काफी फायदा पहुंचेगा। Well, thank you, Poonam, for that gym segment with Sandeep and the importance really of gym training and using dumbbells and weights in order to increase your bulk. Just a cautionary, Rupinder, it's very important really to also train with a trainer, otherwise you will get injured. Absolutely. And in fact, the first step is to do all these things with your body weight. And then we are accustomed to that, then only try starting to do weights. Begin with light weights, have a correct program, develop it slowly over a period of time. Look at the weight power ratio rather than the bulk. Well, moving on to our next segment, we have Aaj Ka Din. In 1989, Richard Hadley picked up his 400th test wicket, trapping Sanjay Manjrekar leg before wicket at Christchurch in New Zealand in the first test match. And our next segment is Aaj Ka Special. What's on for today? First off, we have the Sri Lankan team who will be taking on South Africa in the third ODI at Johannesburg. Next up is Hockey India League 5th edition, where Ranchi Rays take on UP Wizards. And finally, in the IPL 10th edition, Kevin Peterson will not be playing because of other commitments. Well, I hope you're tuned on to your TV set and watching the latest sporting action. But we have to now thank our guest expert, Rupinder, for being with us on the program, Sports Cafe. Thank you so much, Rupinder, for giving us your explosive view on sports and current affairs. Thank you. It's also time for our viewers to share their thoughts about our program, Sports Cafe, and do connect with us on our social media websites. Facebook, Twitter, YouTube and Instagram. Do write to us. Let us know how we can improve this program. Well, we await your comments on Sports Cafe. It's time now for us to wind up the program for today. Do join us again next week when we show you the morning live show Sports Cafe. Till then, it's namaskar and goodbye.